Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Fiza Mariam. I'm doing my bachelor's in English literature from Institute of Southern Punjab, Multan. I'm contributing as head of debating society in Executive Student Forum. It is a platform where we work on students, provide them professional grooming, educate them, and work on their personality development, which helps them to bring new innovations. Innovation is our tradition. So, here I welcome you all on this very exciting and informative episode of the ESF show. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all. I am Nadir Ali Khan and I am doing my Bachelor's of Business Administration from Institute of Southern Punjab, Multan, and I am working as the President of Executive Student Forum and the Project Head of the ESF show. We are back with the Season 2 of ESF show and I welcome you all on a very first episode of ESF show, Season 2. Few days ago, under the banner of Institute of Southern Punjab, Multan and NUST, Executive Student Forum and NUST Environmental Club has signed an MOU to work for the betterment of environment and for the betterment of the society. Today our guest is none other than that, the former chair of ISPMU in 19 and currently working as the president of NUST Environmental Club. Please welcome our honorable guest, Mr. Mobin. Hello everyone and Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Mobin, कैसे हैं आप? I am doing great. How are you, Nadir and Fiza? I hope you are doing great. It's been a while since I saw you guys. Great too. That's great. So should we begin? Yes, there is some connectivity issue. Okay. Mother is back. Sorry for the internet connections. Acha Mobin, let's start our session. So do let us know about yourself. What are you doing और आपकी degree जो है वो एक environmental sciences से related है. So it's quite new for our students. और जो हमारे students हैं, जो हमारे members हैं, so they were quite asking कि जी like the president of NEC, what he do and जो है वो किस तरह अपनी डिग्री को लेकर चलते हैं. तो डू लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ और आपके जो रोल्स हैं जो आपके एनईसी में जो आपके रोल्स हैं, व्हाट अबाउट दैट? डू लेट अस नो. Sure. Just to clarify, मैं थोड़ा bilingual रहूँगा throughout the session. Yeah. So No our viewers worries at can all. No worries at all. they can easily understand me. Okay, so Yeah, exactly. I am Mubin. I belong to Hunza, the northern areas of Pakistan, and I'm currently doing my bachelor's in engineering of environmental engineering from NUST. Environmental engineering and science are closely related, but in environmental engineering, we're mostly linked towards the solutions of the environmental problems that we have. So it was actually my first preference when I would join NUST, because it started back from my hometown in Hunza, because as tourism grew, there was a lot of pollution that came along with it. Economic improvement तो होती रही, लेकिन there was a lot of pollution. Scenic beauty हमारी खराब हो रही थी, ठीक है, or drinking water was being polluted. So I was like, I have to do something about it. So that's why I joined. I started studying environmental engineering from NUST, and so this is my passion. Other than that, more to myself, I am currently the board member of Fridays for Future Pakistan. They're an environmental advocacy, you can say, a platform. It's started by Greta Thunberg, if you know. So other than that, I'm a climate reality leader endorsed by ex-Vice President Al Gore, if you know. It was an international training I got selected for, and I'm currently a known climate reality leader. So other than that, as you said, Nadir, I'm currently the NUST Environment Club's president, and the previous NUST NEC's president was Jafar Abbas, who was your previous Yeah, exactly. guest. I know that. And I'm honored to be here. So yeah, I think that is about me. Yeah, indeed, it's an honor for us as well. Glad to have know you. that. Sir, as you're the president of NUST Environmental Club, first of all, it is a remarkable achievement to be a president of a prestigious society
We are glad to have you on this platform. Kindly let us know about NUST Environmental Club and its working. Sure. So NEC was founded 2 years after NUST in H12 was made. It was when our department, it was built. So after that, our pioneering seniors started this environment club, and its basic aim was to, spread environmental awareness using multiple events and small events. At that time, it used to be a small club, but now it's one of the major societies in NUST. We currently have a council of 100 students. We have 4 wings. It's the environmental secretary, general secretary, treasurer, and the press secretary. So they have multiple roles, and all of these 4 wings are controlled by me, the president. And so Environment Club is the role of Environment Club, if you ask, and our slogan basically is "Be the change you want to see." फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी रोड के साथ चलते हैं तो हमें काफ़ी वहाँ पे मतलब पोल्यूशन वगैरह नज़र आती है for example plastic and all, and you can see that traffic is contributing to a lot of carbon dioxide emissions. So we just want people to know, okay, this is why our environment is being polluted, and we have to work for it, and be the advocates for the environment. So that is the sole purpose of the NUST Environment Club, and I think we're doing a pretty fair job so far in hosting events, especially during the COVID-19 pandemic. या बिल्कुल एग्जैक्टली जब स्पेशली इस्लामाबाद के रीजन के अंदर जो NEC की जो वर्किंग है इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल एंड यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब एनवायरनमेंट के लिए काम करना इट्स अ बिग डील और कोई पहला ऐसा इनिशिएटिव है कोई ऐसे क्लब एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है टू डू द बेटर फॉर द एनवायरनमेंट और जितना एनवायरनमेंट बेटर होगा उतना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे उतनी अच्छी सोसाइटी होगी और उतना अच्छा ओवरऑल का माहौल We need to take more initiatives regarding environment. Yeah, exactly. अच्छा जाफर NEC जैसे सबको पता है कि NUST एनवायरमेंटल क्लब है और उसकी अपनी हायरार्की है, they do have their visions and missions. So do let us know about the role, the exact role of NEC और इनका जो विजन और मिशन क्या है? Because जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एनवायरनमेंट को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके रहते हुए काम करना चाहते हैं, उनके जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है वो यही है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट विजन एंड मिशन ऑफ एनवायरनमेंट. या आप NEC ले लें चले, NUST एनवायरमेंटल क्लब. What is the mission and vision of NEC and overall the role of NEC? Right. So as I mentioned, our slogan is "Be the change you want to see," right? And our basic and core purpose is environmental awareness and action. Our mission and our vision is closely related to the SDG 13, which is climate action. कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी अचीव किया है SDG 13 so far, but it's still questionable given our current situation. So it's again related to the climate change as well. So हम जो भी events वगैरह करवाते हैं, basically they revolve around this vision and mission, and we basically want the locals, especially in NUST for now, and Islamabad and Rawalpindi, to know about what our environment is going through, what our actions, what our actions result, and the effects of our actions. Excuse me. So other than that, we do it through organizing events. Most of them are NUST level events, right? And most of our collaborations are with the WWF, Pakistan Red Crescent, and Frederick Naumann Foundation. I was back when I was a team member. I actually I was the event head for the Eco Earth Carnival, which was on the Earth Day. So it was one of the biggest events in NUST, and it had quite a lot of impact. And its main reason was to show conservation of energy and how our solid waste is actually handled. So it was a zero waste carnival. That means after a whole carnival of participation of around 500 plus participants, there was not a single waste after the shamianas and everything was wrapped up.
So that was one of the achievements of NEC. And now ESF and NEC is in collaboration as well with the same vision. Exactly. And inshallah, we'll have collaborative events in the future. So Inshallah. another aspect I want to mention about NEC is the Dectus Exemplo. I'm sure you've heard about Dectus Exemplo as well. It means Yes. lead by example in Latin. So it was the brainchild of NEC. Your previous guest, Jafar, Adina, and myself are the co-founders of DE, and currently we're leading it. So the purpose of Dectus Exemplo is to reach out of NUST and spread environmental awareness on grassroots levels, which is the college students and the A levels, the O level students. Exactly. So that is how we are going about our vision and mission. That's great. That's impressive. That's great. Thank you. That's quite impressive, Mobin. Recently, the MOU has been signed between NEC and ESF. So what are your thoughts about ESF and how is your experience with ISP so far? Okay, I think I'll take you guys back to when I attended the MUN. I got to know that I was heading as the chair of DISEC, and I came to ISP, and I was like, given I have never been to Multan, I didn't have much of expectations. But when I came to ISP and the whole organization of the event, it was marvelous. So that's the reason why we collaborated, and it's because Arsul, our current press secretary, was also one of the co-chairs in ISP month, and I saw that ESF was actually motivated to work. So I was like, this is a great opportunity for NEC as well. So that is why we thought to sign an MU, and we also have an event upcoming in April, hopefully. And I'm actually looking for ways we can work together in it, inshallah. And I think this is the first time a NUST Environment Club has collaborated outside of NUST. We have collaborations within NUST, but this is the first time we have collaborated outside NUST. Yes, I'm glad as well. So looking forward to working with ESF. Same here. Inshallah. We have high hopes as well. Likewise. Inshallah, we are also looking forward to you, और inshallah हम अप्रैल में मजीद जो है collaborations के साथ काम करेंगे और events करेंगे inshallah. And thank you so much for the good remarks for the MUN team, and it was no problem. Honor for us to have you in MUN as well as in thank you so much. अच्छा जाफर, जैसे आपने बताया कि it was degree कि डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप एनवायरनमेंट जो है सीख रहे होते हैं या आप पढ़ रहे हो, तो एनवायरनमेंट जो है जो आप ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आप काम तो करते हैं, लेकिन आप जो सीखते हैं वो आप डिग्री से भी सीखते हैं. मतलब आप जो आप पढ़ रहे होते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई या आप एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ रहे होते हैं, तो हम कोई ऐसा इनिशिएटिव क्या आपकी नज़र में हो सकता है बीइंग अ प्रेसिडेंट एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कि हम ऐसे क्या प्रेसिडेंट सेट करें, हम ऐसा क्या मोटिवेशन फैक्टर्स लेकर आएँ कि जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि वो इस फील्ड की तरफ आए, इन क्लब्स को ज्वाइन करें, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें और एनवायरनमेंट के लिए बेहतर काम करें. क्योंकि हर बंदा जो है उसकी डिफरेंट जो होती है वो फील्ड्स होती हैं और डिफरेंट उसके शौक्स होते हैं. तो इसमें ये होता है कि आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई मोटिवेटिंग हम कोई स्किल्स ला सकते हैं या हम कोई ऐसे फैक्टर्स डेवलप कर सकते हैं कि जिससे वो अट्रैक्ट हो और इस फील्ड की तरफ आए. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे और आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक नादिर, जो आपने पहले बात की है कि हम स्टूडेंट्स को किस तरह बताएं, तो आई थिंक ये पहला ही स्टेप है कि हमें स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना चाहिए, बिकॉज द यूथ इज वेयर ऑल द एनर्जी कम्स फ्रॉम, राइट. तो इट वाज आल्सो प्रूवन बाय डक्टस एग्जाम्पलो. जब हमने अपना पहला सेशन करवाया था तो वहाँ से हमें एक्चुअली इतना अच्छा फीडबैक मिला था विच प्रूव्ड कि यूथ इज व्हाट हु नीड्स टू बी टारगेटेड, राइट. क्योंकि दे आर द मोस्ट प्रोन टू चेंज, और वो नए नए आइडियाज भी इजीली मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने पास, ठीक है, एज कंपेयर टू द एल्डरली जिनके ऑलरेडी अपने बिलीव्स फर्म हो चुके हैं एंड दे आर मोर रिलक्टेंट टुवर्ड्स चेंज, राइट. एंड राइट नाउ ऑल वी नीड इज चेंज in our norms, in our daily lives, in our actions, right. So first of all we need to target the youth, and after that, I mean, chalo, youth to energetic hai, they have to work. I mean, unko
पहले तो ये पता होना चाहिए कि what they are fighting for, right? Which relates to environmental awareness, ठीक है? Which Dr. Exemplar is doing again. तो इसमें आपको सारा कुछ बताना चाहिए कि how what environment is, उसमें what are the boundaries और क्या क्या काम किए जा सकते हैं, क्या हो रहा है, and how it's actually being affected right now, especially after the Industrial Revolution, right? तो इस ये environmental awareness से relate करता है. Then comes action. Now, this is a very crucial factor in environmental advocacy, or this is where most of the people lack. I mean, there are many people jinko awareness puri hai, theek hai, and they are very well aware of the situation, lekin they just don't take the first step. For example, अगर मुझे लगता है it's a very small scale, अगर मुझे मैं aware हूँ कि अगर मैं अपनी एक प्लास्टिक बॉटल बाहर सड़क पे फेंक देता हूँ तो उसके क्या नतीजे होंगे, what effect will it have on our environment? So I see somebody in the car throw the plastic bottle outside on the road, right? Now that I'm motivated, अब मेरा ये फर्ज होगा कि मैं उसको जाके बताऊं और उससे मैं आगाह कर दूं कि this is how it should not be and what effects it does have, right? As compared to the other person जो aware होगा but he doesn't take any action, he just sees him throw and just moves on. तो उससे कोई फायदा ही नहीं होगा, harnessing all that knowledge and not taking action is just useless. So first comes awareness and then comes the action part. So it starts with educating on the grassroots levels, take care of the kids, and in the basic living sense in which they do not harm the environment. ठीक है? और by environment I not only mean कि सिर्फ दरख्त को conserve करो, stop deforestation, but it's also wildlife, ठीक है? Animal justice हो गया, ठीक है? And the natural resources जो हमारे पास हैं, right? So it basically might not be a living thing. Exactly, it might not be a living thing, but it can be the resources we consume as well. जैसे कि आपके fossil fuels हो गए, ठीक है? I agreed, fossil fuels give us good energy, लेकिन we have cleaner ways of producing energy as well. So if you are in a decision-making position, तो आपके हाथों में है कि if you are environmentally aware, you can actually take the action to choose the greener solution than the one which is cheaper. In the short term, but very damaging in the long run. So coming back to the topic, first of all, again, I'll reiterate कि सबसे पहले environmental awareness होनी चाहिए. It starts from the low level. बच्चों को सिखाएं, आप अपने curriculum में डालें about the current situation and the gravity of the current situation. किस तरह पाकिस्तान 5th most affected है in terms of climate change all around the world. And then the kids should be motivated to take action against it. It can be as simple as turning off the light before you leave the room and turning off the tap when you're brushing your teeth, to policy making level. So that's just how I think students can be motivated. Beautiful. Very informative, Mobin. Mobin, how NEC is working for well-being of the society in your opinion? How do you project NEC making a positive impact and positive contribution to the society? Right. As I mentioned, NEC works strives to achieve its mission through the events that we are doing, right? I mean, social media marketing to hoti rahegi about the facts and figures. Lekin we also host multiple events inside NUST which have a long-lasting impact. तो बेसिक हमारा मकसद ये होता है. So first of all, we as a president, I want the change to start from within our council of 100 students. So मैं clarify करना चाहूँगा कि हमारे पास हमारे council में सिर्फ environmental engineers ही नहीं है, but we have a very diverse council. We have students from business, from mechanical engineering, chemical engineering, and also natural sciences. तो हर किस्म के हैं. We have a plethora of the council. So मेरा basic मकसद ये कि even if they learn a single thing by being in NEC, we are successful. ठीक है, अगर एक को भी पता चल जाता है कि क्या gravity है इस situation की, how much we are affecting the environment, ठीक है, I am happy कि उन्होंने कुछ सीख के चले गए हैं. Other than that,
I just want the council to improve themselves and come up with events which are more impactful, okay, and which motivate the society to make an action, right? Yes. Taking you back to NUST Environmental Peace Summit, which was hosted by one of our team council members. So इसमें हुआ ये था कि it related environmental awareness to the general peace in human society, ठीक है? Which are very closely linked. अगर आपके environment में peace ना हो तो how can there be peace in your own mind and in your own household? ठीक है? Yeah. So that is how we impacted the students inside NUST. So basically, as you said, Nadir, we have to teach the students, right? So our target market is the students inside NUST for now. Okay, iske baad, they will be in decision-making positions, inshallah, and they will be taking decisions which is beneficial for the community. Okay, so if NEC teaches them and helps them become more aware about the environment, I think we are contributing very well to the society. So again, our target is the young professionals and the young generation inside and outside our campus. And they're the most energetic to bring about change in the campus and the society. So this is just one of the many ways the NEC is contributing to the society. Again, Dr. Example ko maine bata diya, which is more of an outreach and breaking the geographical boundaries within NUST and looking beyond the barriers of NUST. Yeah, exactly. Thank you, Mobin. Most important You're thing we welcome. should work more. We should work more on all these points you told, and we should work We for should, the yes. good of society. Yeah, we should. बिल्कुल. I think everyone should play a part on their behalf. Exactly. Environmental engineering अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि if I'm an environmental engineer, I should be the one who has to work for the environment. नहीं, environment is the one thing which is common to everybody, be it a businessman or an engineer, ठीक है? तो हम सारों का ये हक बनता है कि we We conserve live our in the environment. same environment. हम पढ़े लिखे हैं नहीं बिल्कुल. हैं, हम अगर environmental sciences पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, that doesn't matter. हमें contribute करना चाहिए अपना part society में. Very right, Fiza, very By right. every means we have. बिल्कुल. Yeah, exactly. We have to do Here is our a best for question. society. Sorry, Mubin. Here is a question from our member. कि Sure. बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ाई की तरफ नहीं है. There is a large rate of illiteracy as well. तो हम लोगों के minds में किस तरह डाल सकते हैं कि education is a necessity of life. And और हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, लाइक वी आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो हमें बताया जाता है कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड. वी ऑफन हैव सेमिनार्स रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. तो उन लोगों को जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, उनको हम कैसे इस तरफ ला सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, आप अपना पार्ट प्ले करें माशरे में, तो उनको हम कैसे ये चीज़ें उनके माइंड में कैसे डाल सकते हैं? Right. I'll start by giving example of Hunza. As you know, Hunza की literacy rate is near 100%, right? तो इसका ये मतलब है कि every child over there at least has primary education, right? तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे households हैं हुंजा में जिसमें आपकी पुरानी generation is totally illiterate, लेकिन उनके बच्चे are actually studying. So this shows कि आपके अपने घर के अंदर grooming होनी चाहिए कि आपको मतलब आपकी एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ठीक है? आई मीन वी आर एन एग्रीकल्चरल सिटी, ठीक है? हमारी अपनी फील्ड्स वगैरह होती हैं, लेकिन बच्चों को इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम वर्किंग ऑन द फील्ड, दे आर एक्चुअली बीइंग सेंट टू द स्कूल्स, ठीक है? और एंड देयर पेरेंट्स आर देमसेल्व्स पुटिंग देमसेल्व्स ऑन द लाइन. बेशक उनकी एज काफ़ी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द फील्ड देयर चाइल्ड शुड गो एंड हैव एजुकेशन, right? But there are many societies जहाँ पे they are actually क्या कहते हैं, they are more stubborn towards letting their students go, their children go and have education, right? So this is a taboo. काफी घर वाले कहते हैं कि क्या फायदा होगा, ठीक है, जाके शादी करनी है आपने, ठीक है? लेकिन इसमें फिर एक तरह से एनवायरनमेंट से रिलेट करता है कि जब मैं गया था अपने इंटर्नशिप में स्लम्स में,
उनको भी पता था कि वेदर पैटर्न्स बहुत चेंज हो रहे हैं, उनके अपने क्रॉप्स बहुत खराब हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको फिर ये एहसास होने लगे कि भाई हमें भी पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है एंड हाउ वी कैन टैकल इट, व्हिच इनडायरेक्टली पुशेस देम टुवर्ड्स हैविंग अ बेटर एजुकेशन, ठीक है। तो अगर हम उनको इस तरह के इंसेंटिव दे दें इन विच देयर चिल्ड्रन कैन एक्चुअली गो एंड हैव एजुकेशन, जिस तरह फॉर एग्जांपल जर्मनी में होता है, देयर एजुकेशन इज कंप्लीटली फ्री, ठीक है, so they don't have to think about paying and the financial burden education has on their family. तो इस तरह की incentives हो सकते हैं, और above everything I think the grooming within the family matters a lot, and इसीलिए हम like the education can be prioritized. अवेयरनेस, बेसिकली अवेयरनेस की बात है। जितनी अवेयरनेस होगी, बिल्कुल। जितना आप ग्रास रूट लेवल पे इन चीजों को डील करेंगे, दैट विल बी मोर गुड फॉर द सोसाइटी एज वेल फॉर द एनवायरनमेंट। अच्छा अवेयरनेस तो मुबीन, हम अपने बिहाफ पे भी दे सकते हैं लोगों को, लाइक जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारी अगर मेड्स आ रही हैं, उनके बच्चे उनके पास उनके साथ आ रहे हैं, तो हम उनको भी गाइड कर सकते हैं कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। हम अपना पार्ट तो प्ले करें सोसाइटी में। बिल्कुल 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 ऐसा ही होना चाहिए, और आपको हर किसी को अवेयरनेस देनी चाहिए, और अवेयरनेस से ही चीज़ें बढ़ती हैं और आगे हम जाते हैं। अच्छा मुबीन, जैसे हम लोग बात बिल्कुल। करते हैं MUN, हम लोगों ने MUNs लीड किए हैं, चेयर भी किए हैं, तो जी जी एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल MUN में भी है व्हेन इट कम्स टू द UNDP डेवलपमेंट ट्रू। प्रोग्राम, तो प्रोग्रामिंग, तो उसमें भी एनवायरनमेंट का जो है अफेक्ट होता है। तो लाइक डू लेट अस नो कि MUN के अंदर हम एनवायरनमेंट को किस तरह लेके चल सकते हैं, और द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसमें आगे इसका क्या स्कोप है और क्या फ्यूचर है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट डू हैव देयर स्कोप, उनका स्कोप क्या है और उनका करियर क्या है? अच्छा, एज फार एज MUNs आर रिलेटेड, आई थिंक इसमें तीन यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज हैं, विच इज एज यू सेड UNDP, और UNEP Yeah, है विच इज एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एंड UNFCCC है विच इज अबाउट क्लाइमेट चेंज, exactly. राइट? तो these three can be incorporated into MUNs, और इसमें मेजर the जो debating point आता है हमारा, especially in Pakistan, it is whether to put economy first or our environment first, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत मतलब इस वक्त काफी फ्रेजाइल है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान रैंक्स 5th मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज एज वेल। तो हम किसको प्रायोरिटाइज करें, ठीक है, इसका बेस मतलब टू कट इट शॉर्ट आंसर यही है, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसपे यूनाइटेड नेशन बहुत काम कर रहा है आजकल, स्पेशली थ्रू UNDP, ठीक है। इफ यू वांट टू डेवलप अर्बन सिटी फॉर एग्जांपल, उसके अपने एनर्जी की रिसोर्सेज हो सकती है, वो ग्रीन हो सकती हैं, ठीक है, उनकी जो वाटर कंजम्पशन है वो सस्टेनेबल हो सकती है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड वी कैन इनकॉर्पोरेट सर्कुलर इकोनॉमी इनटू आवर डेवलपमेंट एंड आवर सिविल सोसाइटी। तो उसके अलावा आपने जो सवाल पूछा कि हाउ एनवायरमेंटल इंजीनियर्स प्ले अ पार्ट इन द सोसाइटी, हमें सब कुछ सिखाया जाता है, फ्रॉम द बेसिक नट एंड बोल्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग टू पॉलिसी मेकिंग एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है, ताकि सो वी कैन बी द ब्रिज बिटवीन द साइंस साइड एंड द मैनेजरियल साइड, ठीक है, ताकि हम वी नो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंड हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट बोथ ऑफ देम टू हैव अ सस्टेनेबल लिविंग। तो आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। या एग्जैक्टली। बेसिकली आज का जो हमारा शो था उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें ही सीखी हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए, उनके करिकुलम में हम जो है ये चीज़ अटैच करें कि द एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू द सोसाइटी। यस और जो है यस एग्जैक्टली। इस फील्ड के बहुत बेनिफिट्स हैं, इस फील्ड के बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे, और मैं यही बिल्कुल सजेस्ट करूंगा अपने यंगस्टर्स को, अपने यंग लेट्स को, यूथ को, कि do come and join environment and do betterment, do as much as you can for the environment, बिल्कुल। सोसाइटी को बेहतर बनाएं, बेशक आपका environment के लिए काम करें। बिल्कुल, बेशक आपका मेजर Yeah, वगैरह ना हो इसमें, ठीक है, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल प्ले योर एग्जैक्टली, पार्ट, ठीक है, बेशक आप माइनर ले लें नहीं इस सब्जेक्ट के अंदर एंड लर्न even a little about the environment, because environment is common to the whole world. एग्जैक्टली, Everyone do should join play clubs, their part in organizations. society. Yep. Thank you so much Mubin for your time.
It was a great time. It's an honor for us to have you on ESF I'm show. humbled. Thank you so much, It's a Nadir. really pleasure for us to have We really you and host appreciate you. what you're doing in your society, Mobin. Yeah, Thank you been so much, really Fiza. I'm humbled and just trying to play my part in the society. no worries. Thank you That's so great. much. And अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और Thank you. अपना ख्याल रखिएगा सब लोग each and everyone अपना सब लोग ख्याल रखिएगा आज के लिए खुदा हाफिज इंशाल्लाह we will be back with another episode. Allah Hafiz. Allah Okay. Hafiz. Assalamu alaikum.